Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our topic is inelastic collision in two dimensions. Two dimensions में inelastic collision. Inelastic collision, you means that collision in which kinetic energy does not remain constant. Kinetic energy changes after the collision. That collision is called inelastic collision. Second is two dimensions. Two dimensions means that the bodies after collision does not move in the same direction. They move in xy plane, making certain angle with the x-axis. So let's consider two bodies. X-axis, y-axis. A body of mass m1 coming from this direction with the velocity v1, and the other body of mass m2. It is moving with velocity v2, making certain angle theta with the x-axis. After the impact, they just stick with each other. एक दूसरे के साथ ये stick हो जाते हैं and form a one body of mass m1 plus m2 and move in this direction. Its mass now is m equal to m1 plus m2 and its velocity is vf, making angle phi with the x-axis. Here is x-axis and here is y-axis. Let's write. We consider two rigid bodies or rigid bars of masses m1 and m2. m1 is moving with velocity v1 along x-axis. ये along x-axis move कर रही है with the velocity v1. और m2 is moving with velocity v2. Making angle theta, making angle theta with x-axis. ये x-axis के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है. ऑरियन पर जाकर ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं. At origin, they collide. और एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं. And stick with each other
forming a body of combined mass. अब एक ही बॉडी बन जाता है इनका, जिसका कंबाइंड मास m, that will be equal to m1 plus m2. ये एंगल फाई बनाता हुआ इस तरफ मूव करता है with the velocity vf. It moves with velocity vf at angle phi with x-axis. x-axis के साथ फाई एंगल बनाता हुआ ये मूव करता है. अब देखें, दिस इज मूविंग अलोंग x-axis. ये एंगल थीटा बना रहा है m2 एंड मूविंग विद वेलोसिटी v2 और ये एंगल फाई. तो ये v2 और vf इसके हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना पड़ेंगे. Resolving v2 and vf in rectangular components. In rectangular components. ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस तरह से बनेंगे. इस तरह से यहां से बना लें इसको. This will be v2y and this will be v2x और इसके ये कंपोनेंट्स इस तरह से बनेंगे. This will be vfx and this will be vfy. v2x x component, that is v2 cos theta. Similarly, v2y is equal to v2 sin theta और vf के vfx this is vf cos phi and vfy this equal to vf sin phi. We have resolved v2 and vf in rectangular components. अब हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस डिटरमाइन कर लेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Using law of conservation of momentum. Momentum of the system before collision is equal to momentum of the system after collision. Momentum
before collision is equal to momentum after collision. First of all, along x-axis. Along x-axis. Momentum of M1. This is moving along x-axis. This is M1 V1 plus इसका x component, that is M2 V2 cos theta. V2x is equal to V2 cos theta. Its momentum along x-axis M Vf cos phi. Momentum of the system before collision, momentum of the system after collision along x-axis M1 V1 plus M2 V2x. V2x means V2 cos theta. M Vfx. Vfx means Vf cos phi. Similarly, let it be equation 1 along y-axis. Similarly, along y-axis. This V1 has no component along y-axis. Y-axis only this one. M2 V2 sin theta. That should be M Vf sin phi. V2y, V2 sin theta and Vfy, Vf sin phi. Law of conservation of momentum has been applied. Next is kinetic energy. Kinetic energy does not remain constant. Therefore, we shall determine loss in kinetic energy, initial kinetic energy of the system. Initial kinetic energy, that is 1 over 2 M1 V1 square. M1 की and 1 over 2 initial kinetic energy 1 over 2 M1 V1 square plus 1 over 2 M2 V2 square and final kinetic energy. And final kinetic energy, that is 1 over 2 M Vf square. Loss in kinetic energy, difference of the two. Loss in kinetic energy. Kinetic energy initial minus kinetic energy final. That is 1 over 2 M1 V1 square plus 1 over 2 M2 V2 square. This is initial kinetic energy minus final kinetic energy 1 over 2 M Vf square. This is the loss in kinetic energy. 1 over 2 M1 V1 square इसकी kinetic energy, 1 over 2 M2 V2 square इसकी kinetic energy. Kinetic energy स्केलर क्वांटिटी है,
इनकी सिंपल एडिशन होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m and vf square. Now we can determine the final velocity of m. इस कंबाइंड मास की फाइनल वेलोसिटी हम डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग these two equations. That's final velocity of m. From equation 1, इस इक्वेशन से ये VF, सॉरी दिस इज इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से ये VF cos phi, दिस इज VFX is equal to VF cos phi and this is equal to M1 V1 plus M2 V2 cos theta. M1 V1 plus M2 V2 cos theta and divided by M. VF cos phi, ये M के ऊपर ये चीज डिवाइड हो जाएगी M1 V1 plus M2 V2 cos theta divided by M. Similarly, from equation 2, this is VFY is equal to VF sin phi and this is equal to VF sin phi M2 V2 sin theta divided by M. M2 V2 sin theta divided by M. Now we have determined the x component of final velocity and here is y component of final velocity. Then the magnitude of final velocity, that will be Vf x square plus Vf y square and whole under root. कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू और कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड वी शैल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी. और फॉर डायरेक्शन आप लोग जानते हैं वो यूज टेन थीटा, और डायरेक्शन टेन फाई. V Fy over V Fx and phi is equal to tan inverse V Fy divided by V Fx. So putting the value of V Fy and V Fx in this equation, we can determine the direction of the mass m n, in which the mass m is moving after inelastic collision. Now there are certain examples of inelastic collision. Examples: number 1, breaking of bricks by karate chop.
आप लोग जानते हैं कि कराटे प्लेयर्स क्या करते हैं, चंद एक ईंटों को इस तरह से रख के, इस तरह से हैंड्स की मदद से, हाथ की मदद से जोर से ऊपर उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं और वो ईंटें जो है वो टूट जाती हैं। अब क्या होता है, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उनके हाथ की काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और स्ट्राइक करने के बाद ये हैंड, ये इट डज नॉट रिबाउंस बैक, ये वापस नहीं आता, बल्कि इट्स काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज यूज्ड इन साउंड, हीट एंड ब्रेकिंग द bricks. So this is the example of inelastic collision, that before striking the hand has sufficient, very much kinetic energy, but after striking most of its part, इस kinetic energy का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है that is used in breaking the bricks, heat and sound. So this is the example of inelastic collision. Similarly, car crash, कार क्रैश, दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं। जब वो आपस में टकराती हैं, दे हैव सफिशिएंट स्पीड, वेरी मच स्पीड, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर, साउंड पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और इन गाड़ियों में बिगाड़ आ जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाती है। अलबत्ता कोलाइड करने के बाद वो ज्यादा रिबाउंड्स नहीं होती, बल्कि जल्द ही वो स्टॉप हो जाती हैं। दिस मीन्स देयर काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, देयर काइनेटिक एनर्जी इन यूज्ड इन डिफॉर्मिंग द व्हीकल्स, यूज्ड इन हीट एंड यूज्ड इन साउंड. This is also an inelastic collision. Bat and ball, बैट की मदद से बॉल को स्ट्राइक करते हैं, तो बैट अपनी सारी एनर्जी बॉल को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि कुछ एनर्जी साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जब बॉल स्ट्राइक होता है तो बॉल के अंदर भी डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है, जिसमें भी एनर्जी है वो लूज होती है। सो दिस इज आल्सो एन inelastic collision, not an elastic collision. Kinetic energy used in heat, in sound, and in deformation of the ball. So these are the three examples given in your books for inelastic collision. और इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।